Hello dear students, very good morning to everyone. Today we are going to discuss the topic combination again, and here we are going to discuss about few key points, few concepts, and as well as going to solve the exercise 7.4 of NCERT textbook. Okay, so आज का क्लास का यही ऑब्जेक्टिव है. प्रॉब्लम किया जाएगा वट एवर द कॉन्सेप्ट वी हैव लर्न, सारे कॉन्सेप्ट लेके, और आज थोड़ा सा एडिशनल कॉन्सेप्ट डिस्कस करूँगा, और इसके बाद एक्सरसाइज 7.4 का जो क्वेश्चंस है उस क्वेश्चन से कुछ क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूँगा और कुछ क्वेश्चंस आप लोग करेंगे. ठीक है. सो फर्स्ट की पॉइंट इज, यू सी देयर आर, आई हैव रिटन की पॉइंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, for first key point is from n different things. What is the n different things? Selecting r things at a time, okay, in which p things are always included, is given by the relation n minus p combination r minus p. ठीक है. तो इनिशियली क्या होता है, फ्रॉम n different things taking r selecting r things at a time is given by what? NCR. ये होता है, पता है कि नहीं? फ्रॉम एन डिफरेंट थिंग्स आप आर थिंग को सिलेक्ट करने का जो तरीका है ये क्या है? NCR है. ठीक है. बट हियर इट इज़ गिवन दैट इफ पर्टिकुलर पी थिंग्स आर ऑलवेज इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर सिलेक्शन. इस सिलेक्शन में पी थिंग्स क्या होना चाहिए? ऑलवेज इंक्लूडेड होना चाहिए. तो आई एम गोइंग टू गिव एन एग्जाम्पल. सपोज दैट देयर आर 10 बॉयज़. ओके, देयर आर 10 बॉयज़ सपोज, and you are to form a team of 5 boys. You are to form a team of 5 boys. Okay, in which condition is what? In which 2 boys, particular 2 boys always included. ये टीम में रहना ही है, कंपल्सरी. पर्टिकुलर 2 boys always included. ये बहुत इंटरेस्टिंग है. 10 boys है, 5 मेंबर का कमेटी बनाना है आपको, और फ्रॉम हेयर what is given that 2 particular boy always included in the team. ये टीम में 2 boys रहेगा. 2 boys क्या रहेगा? आपको टीम में कंपल्सरी है. ठीक है. तो इफ़ 2 members are always compulsory in the particular team, तो आप टीम में 2 member तो मिल गए, सिलेक्शन करने का ज़रूरत नहीं. 10 में कोई दो पर्टिकुलर पर्सन है जिसका कोई भी नाम होगा. दिस 2 person और दिस 2 boys ऑलवेज इन द टीम, ऑलवेज इन द कमेटी. तो ये 2 बॉयज़ कमेटी में क्या है? इंक्लूड हो गया है. तो हाउ मेनी मेंबर रिमेनिंग? वी हैव रिमेनिंग 3 मेंबर. हमें 3 मेंबर सेलेक्ट करना है. हमें क्या करना है? ओनली 3 मेंबर सेलेक्ट करना है. और कितनी बॉयज़ से सिलेक्ट करना है? दैट्स इम्पॉर्टेंट. सिंस फ्रॉम 10 2 बॉयज़ ऑलवेज इनसाइड द टीम. 2 बॉय क्या होगा? टीम में रहेगा. तो हमें क्या है? 10 - 2 = 8 बॉयज़ से कितना सिलेक्ट करना होगा? हमें 3 सिलेक्ट करने से हो जाएगा. 10 से 2 डिडक्ट होगा, क्योंकि ऑलवेज दिस 2 बॉय क्या होता है? टीम में रहेगा. और टीम में जब रहेगा तो हमें भी 5 मेंबर सिलेक्ट करने का ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ 3 मेंबर सेलेक्ट करने से हो जाएगा. ये जो 3 मेंबर आप सिलेक्ट करेंगे, कहाँ से सिलेक्ट करेंगे? आप 8 से सिलेक्ट करेंगे. आप कहाँ से सिलेक्ट करेंगे? 8 से सिलेक्ट करने से हो जाएगा. इसको कैसे लिख सकते हैं आप? हमें सिलेक्शन करना था 10C5, राइट. लेकिन वहाँ से क्या हुआ? हमें 2 बॉयज़ क्या है? फिक्स्ड कमिटी में रहेगा, फिक्स्ड है. उन लोगों का सिलेक्शन करने का ज़रूरत नहीं, बिकॉज दे आर ऑलवेज इन द कमिटी. सो फ्रॉम 10 पर्टिकुलर 2 बॉयज़ कैन बी सबट्रैक्टेड. कॉम्बिनेशन फ्रॉम टोटल कमिटी बनाना है 5, वहाँ में भी पर्टिकुलर 2 बॉय क्या है? माइनस करना पड़ेगा. ठीक है. तो ये क्या होगा? 8C3. दैट मीन्स व्हाट हैपन? 2 बॉयज़ आर फिक्स्ड एंड यू आर टू select only 3 member from out of 8 members. Okay, 8 boys. This is the particular concept of this. Included जब रहेगा, this very particular things are always included रहेगा. याद रखो क्या है? टोटल से भी माइनस करना पड़ेगा, नीचे भी माइनस करना पड़ेगा. whatever be the things will be fixed, included. कोई भी नंबर ऑफ थिंग्स क्या है? आप ऑलवेज इंक्लूडेड. कोई भी कमिटी हो, अरेंज कुछ भी हो, जो भी कम्बिनेशन हो, उसमें क्या है? आपको ये पी थिंग्स को क्या करना होगा? आपको क्या है? ये
माइनस करना पड़ेगा ना, अपर सफिक्स एंड लोअर सफिक्स दोनों से क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पर्टिकुलर फर्स्ट पॉइंट। द सेकेंड पॉइंट इज फ्रॉम एन डिफरेंट थिंग्स सिलेक्टिंग आर थिंग्स एट ए टाइम, एक साथ लेंगे, इन विच पी थिंग्स आर ऑलवेज एक्सक्लूडेड। जैसे आपकी क्लास में सपोज देयर आर 10 बॉयज़ है, तो इफ़ आई वांट टू क्रिएट ए पर्टिकुलर कमिटी, ओके, पर्टिकुलर कमिटी ऑफ 7 मेंबर, सपोज 10 से मैं कितनी मेंबर का कमिटी बनाना है, 7 मेंबर्स का कमिटी बनाना है, और वहाँ से 10 बॉयज़ से 2 जो बॉय है, पर्टिकुलर 2 बॉय क्या है, उसको कमिटी में इंक्लूड नहीं करना है, उसको दिस 2 particular boy are not fit suppose for this committee and they are always excluded। उन लोगों को क्या जाएगा, एक्सक्लूड किया जाएगा, वो कमिटी में नहीं रहेगा। वो जब कमिटी में नहीं रहेगा, लेकिन हमें तो 7 मेंबर चाहिए कि नहीं, तो 10 में आप पर्टिकुलर 2 बॉयज जो है उसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। एक्सक्लूड करने के बाद क्या होगा, 8 होगा। सो ये 8 मेंबर से आप क्या करेंगे, 7 मेंबर को सिलेक्ट करने से आपका प्रॉब्लम का सल्यूशन निकल जाएगा, ठीक है, आपका काम हो जाएगा। इफ़ आई एम सिलेक्टिंग 7 बॉयज़ फ्रॉम ओनली 8 बॉयज़, बिकॉज ये पर्टिकुलर 2 बॉय क्या है, ये टीम पे नहीं आ सकता फॉर सम कंडीशंस, सो दे आर एक्सक्लूडेड। जब एक्सक्लूडेड होगा, ओनली व्हाट हैपन, अपर सफिक्स से क्या होगा, माइनस होगा, लोअर सफिक्स से माइनस नहीं होगा, इसीलिए कि ये 2 मेंबर क्या है, कमिटी में नहीं आ रहा है और हमें 7 मेंबर का कमिटी चाहिए। दैट्स वाई व्हाट हैपन, 7 शुड बी फिक्स्ड, बट अपर सफिक्स में क्या होगा, चेंज होगा। तो एक्सक्लूडेड होगा, जो वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सक्लूडेड, द वर्ड एक्सक्लूडेड यूज, तो ओनली अपर सफिक्स से क्या होगा, जो पर्टिकुलर थिंग्स यू आर नॉट गोइंग टू एक्सक्लूड, ये पर्टिकुलर थिंग्स को क्या करना है, आप अपर सफिक्स से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, नीचे वाला क्या होगा, फिक्स्ड रहेगा, और इंक्लूडेड होगा तो अपर सफिक्स एंड लोअर सफिक्स दोनों से क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस करना पड़ेगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्टिकुलर 2 एंड ऑन दिस कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस आर देयर, यू हैव टू सॉल्व, बट एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो कुछ चीज़ मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा रिलेटेड टू योर प्रॉब्लम। Don't confine yourself in only NCERT. Yes, NCERT is our base, but beyond NCERT we have to learn many things. Okay? तो जो चीज़ ज़रूरी है, जो चीज़ मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदा होगा, स्टूडेंट के लिए बेनिफिटेड होगा, तो आई विल डेफिनेटली इन माई क्लास include this type of things and try to make you understand. Okay? So you have to cooperate. डोंट कॉन्फाइन एंड डूइंग सॉल्व इन एक्सरसाइज ऑफ NCERT और कर लिया आपका मैथ्स खत्म हो गया, नॉट एट ऑल। वेरी फ्यू क्वेश्चंस आर देयर, अदरवाइज व्हाट हैपन, इफ यू सॉल्व ओनली NCERT सॉल्यूशंस, योर दैट इज इमेजिनेशन, योर थिंकिंग एबिलिटी विल नॉट डेवलप। ओके, सो प्लीज कोऑपरेट। So these are the 2 points I have discussed, and on these 2 points I will solve questions also. Okay, so this is the first question we are going to solve on exercise 7.4. Okay, the question is twice n C3 is 2 and C2 equal to what, 12 is to 1. Before going to solve this question, just I remind you, okay, you know that, like suppose 5C2, how to find? First you write 5, then you next number 5 minus 1 means what, 4, divide by what, factorial 2, okay? And if it is 3, then you have to write like that, 5 minus 2, another factorial will be add, and then denominator becomes what, factorial 3. Okay, this is the expansion of such type of what figure. Okay, combination वाला related figure है, उसको expand कर सकता हूँ, ठीक है। I have discussed it. Now in this particular question, you see your question is twice n C3 divided by what, n C2 equal to what, 12. 12 is to 1 means 12. Cross multiply कर ले, twice n C3 equal to what, 12 n C2. Okay, now expand it. Since suffix is 3, so you have to write like that. Okay, first twice n
then what, twice n minus 1, okay, 1 1 reduce होगा, then what, twice n minus 2, and denominator is what, factorial 3, it is equal to 12. This result is what, n, then what, n minus 1 divided by what, factorial 2. Yes, first n, then next n minus 1. Since there are suffixes 2, so 2 consecutive factor. And since suffix is 3, 3 consecutive factor will be multiplied. Okay. So some calculation is required here. Factorial 3 equal to what? Factorial 3 equal to what? 6 होगा. उसमें ये थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ मैं. फैक्टोरियल 3 इक्वल टू वाट क्या होगा? ये 6 हो रहा है. 2 से 6 कैंसिल होगा तो ये 3 रहेगा. एंड इस फैक्टोरियल 2 इक्वल टू वाट 2 होगा, उस कैंसिल करेंगे तो 6 होगा. होगा कि नहीं? फाइनली क्या हो रहा है, आपको 3 इंटू 6 मल्टीप्लाई होगा. ठीक है. सो आफ्टर कैंसलिंग दिस 2, कैंसिल करने के बाद n इंटू ट्वाइस n माइनस 1 इंटू ट्वाइस n माइनस 2 is equal to 3 into 6, 18n into n minus 1. Okay, I hope you understand. These are the simple calculations. Try factorial 3 equal to 6. This will be cancel, 3 रहेगा. And this is factorial 2 means what, 2 होगा. 2 से cancel करेंगे क्या होगा. ये सारी चीज़ लिखने का ज़रूरत नहीं. No need to write. Directly you have written. Okay, just to explain it, I have written. Okay. So n cancel. This n is also cancel because n is a natural number. Okay. Which equal to, तो ये मल्टीप्लाई करो क्या होगा, 4n स्क्वायर माइनस 2n प्लस माइनस 4n प्लस 2 is equal to, right hand side is what, 18n minus 18. I hope you understand. Okay. And from here just calculation is required, 4n square, and this 6n 18n means 24n, and ये 18 इधर आएगा तो क्या होगा, 20. ओके, 4 से कैंसिल होगा, n स्क्वायर माइनस 6n प्लस what 5, and it can be factorized at n minus 1 into what, n minus 5. I hope you understand. Okay, clear? So from here n equal to what, 1 and n equal to what, 5. ठीक है. तो आप n अगर 1 होगा, if n is equal to 1 then this will be 2 होगा ना. 2c3 is not possible. Okay, when n equal to 1 this will be 2, and upper suffix is cannot less than lower suffix. Okay, and that's why n equal to 1 is not possible. Not possible. Okay, therefore required value of n equal to what, 5. I think there is calculation is correct, no mistake is there. So yes, 4n twice n 4n plus 2. Okay, I think everything is clear, I think. So please go through this. The system is this, in this way you have to solve. Okay, how to expand this and how to expand this. This is the most important, and remaining all things are related to your class 10 level. Okay, quadratic equation you have to solve. Okay, nothing is there in this particular problem. I have taken two questions. That these two questions are, first question is what, NC4 equal to what, NC6 given. You have to find 12Cn, and second question is 16Cr is equal to what, 16Cr plus 2, find RC4. Okay, so in this case you have to find what, n, and in that case you have to find what, Ar. So you know a particular property, NCx equal to what, NCy. When both are equal, this equal to this when x equal to what, y. Okay, and if x not equal to y, then what happen, x plus y equal to what, n. Sum of this suffix equal to what, n होगा. ठीक है, ये प्रॉपर्टी था. ओके,
Now here you see suffix are what? 4 and 6. 4 and 6 are not equal. So since both are not equal, so we will use this particular result. Okay. So given relation start NC4 equal to what? NC6. So from here you can write n equal to what? 4 plus 6 equal to what? 10. Now you are going to find 12Cn. 12Cn is equal to what? 12C10. And I already told you another property, NCR equal to what? NCn minus R. When we use this, when the lower suffix is larger number, so उसको क्या करेंगे? 12C 12 minus 10 is equal to what? 2. That formula I have applied. Okay. And 12C2 is equal to what? 12 into 11. Consecutive numbers multiply करो, divide by what? Factorial 2. Factorial 2 means what? 2. So 2 to cancel. Ultimately answer is 66. Okay. This is the solution of the first question. Now second question. Second question में आप फिर you see that is given your 16CR equal to what? 16CR plus 2. Okay. And R is a what? Natural number always. Okay. R is a natural number. Okay. So if it is suppose some natural number, suppose 2, then it will be 2 plus 2, 4 होगा. That means R and R plus 2 are not equal. So since you write R is not equal to R plus 2, therefore by our formula दोनों का sum क्या होगा? दोनों का sum क्या होगा? 16 होगा, n होगा. ठीक है. Here n equal to what? 16. So from here twice R equal to what? 14 or R equal to what? 7. Now you are going to find therefore RC4 equal to what? 7C4. Now suffix is what? 4. Suffix is what? 4, and 4 is more than 50% of 7. 7 का 50% क्या है? 3.5 है. तो 50% से ज़्यादा है तो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो NCR इक्वल टू NCn माइनस 1. तो इसको लिख सकते हो 7C3. 7C4 is equal to 7C7 minus 4 means 3. So if you calculate, the result is 7 into 6 into 5 divided by what? Factorial 3. Factorial 3 means what? 6. Okay. So you cancel it. Answer is what? 35. Okay. This way you can find out the solution of this type of that. This is a very good question. Twice n Cn. Twice n Cn is equal to what? You have to prove that 2 to the power n into 1 into 3 into 5 dot 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 twice n minus 1 divided by what? Factorial n. These numbers are what? 1, 3, 5. All are what? Odd numbers. All are what? Odd numbers. Okay. So let us start with the left hand side and try to solve this particular question. Okay. Twice n Cn. तो आपका फॉर्मूला यूज़ करो. फैक्टोरियल का फॉर्मूला क्या था? फैक्टोरियल ट्वाइस n divided by factorial n into factorial twice n minus n. Okay. Use the basic fundamental formula. Okay. Then this is factorial n. This twice n minus n is equal to what? Factorial n होगा. Factorial n to factorial n means what? Factorial n whole square. Factorial n whole square हो जाएगी. And this twice n can be written as, this twice n means what? Product of first twice n natural numbers. You can write 1 into 2 into 3 into 4 into, in this way go. Finally what? Last term will be twice n, and the before last term, what is the term? Twice n minus 1. Okay. ये होगा कि नहीं? Now in numerator you see, in numerator you see there are numbers. Some number are odd number, some number are even number. What are the odd numbers? 1, 3, 5 up to twice n. If it is an even number, because it is a multiple of 2, ये अगर इवन है तो उसका प्रीवियस नंबर क्या होगा? ऑड होगा. जैसे 4 के प्रीवियस नंबर क्या है? 3 है. इट इज़ एन ऑड नंबर. सो ट्वाइस n minus 1 is also an odd number. So if we arrange all the odd numbers together, 1, 3,
5 dot 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 twice n minus 1 together. Okay, and all the even numbers are also together. All the even numbers क्या होगा 2 4 6 dot 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 what twice n. Okay, these are together and these are also together. Okay, understood? Divided by what? Factorial n. Clear? Now in this particular number you can write as, it can be written as what 2 into 1 2 into 2 dot 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 2 into n. Can I write this? And every term, so this term, every term are multiplied. Every term are what? Multiplied. So इसमें क्या होगा 2 बाहर करेंगे तो 2 multiplied into 2 into 2. Okay, all the 2's together, सबको हम एक साथ करके मल्टीप्लाई कर ले. There are how many terms? 1 2 up to what n. That means there are n terms are multiplied. इसमें कितने टर्म मल्टीप्लाइड हुए? There are n terms मल्टीप्लाई हुआ है. और इसमें कितना 2 मल्टीप्लाई हुआ है? Similarly there are n 2's multiplied. So if you multiply 2 into 2 into dot 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 2, how many times? n times. Then this result is equal to what? 2 to the power n. That means ये सारे 2 को निकाल के मल्टीप्लाई कर लो तो क्या रिजल्ट होगा? 2 to the power n हो रहा है. और व्हाट विल बी रिमेनिंग? हमारे पास क्या रहेगा? 1 into 2 into 3 into डॉट 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 व्हाट n रहेगा कि नहीं? तो हम लिख सकते हैं स्टेप से, नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकता हूँ मैं? थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करूँगा, थोड़ा सा फास्ट कीजिए आप लोग. 1 into 3 into 5 dot 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 what twice n minus 1 bracket है, it cannot be changed, but here you can write 1 2 will become from here 1 2 आएगा 1 2 आएगा 1 2 आएगा. that means there are n 2's will be multiplied and this n 2 multiply करने का जो तरीका है क्या है? 2 to the power n. I hope you understand. Within the bracket it will be 1 to 2 into 3 dot 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 what n. ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा? ये सारी नंबर मल्टीप्लाई रहेगा. 2 तो एवरी टर्म में क्या है? मैंने 2 पिकअप किया है एंड ऑल द 2's आर मल्टीप्लाइड हाउ मेनी टाइम्स? n टाइम्स एंड देयरफॉर इट्स रिजल्ट इज इक्वल टू व्हाट? 2 to the power n. And this multiplication 1 2 3 up to n, it is the multiplication of first n natural number and which is nothing but our factorial n. Okay, so नीचे तो factorial n whole square है, factorial n whole square एंड इसको हम फैक्टोरियल एन लिख सकते हैं. ठीक है, सो व्हिच इक्वल टू दिस पर्टिकुलर टर्म, फर्स्ट टर्म रिमेन सेम 1 into 3 into 5 dot 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 what twice n minus 1. Okay, and this 1 2 3 up to n क्या है? 2 to the power n is also multiplied 2 to the power n, इधर लिख लो 2 to the power n. And this one is what? Factorial n. Okay, this one is what? Factorial n and divided by factorial n whole square. Okay, factorial n whole square. तो इस दोनों में आप कैंसिल कर सकते हैं हम. ठीक है, you can cancel it, this one cancel with what? This, and finally you will get your right hand side which equal to 2 to the power n into 1 into 3 into 5 dot 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 twice n minus 1 divided by what? Factorial n. So this is your right hand side. Okay, in this way you can prove this type of question. Nice question and important one for you. Okay, so this type of question may not be in your NCERT textbook, but whatever in examination it can be asked. We have seen that in the last few years question paper, फर्स्ट ईयर में मैं बात कर रहा हूँ, तो हमें क्या है NCERT से बाहर क्वेश्चंस, काफ़ी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए हैं, तो आपको थोड़ा सा NCERT से बाहर सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है, सो आई विल चूज फ्यू क्वेश्चंस एंड सॉल्व सच दैट यू कैन गेट एन आइडिया टू सॉल्व मोर क्वेश्चंस फ्रॉम अदर रेफरेंस बुक्स. ओके, आप पढ़ सकते हो. ठीक है, सर द फ्यू क्वेश्चंस आई हैव गिवन यू एज ए होमवर्क. ओके, so all of you go through this particular homework, okay, and try to follow the instruction of the question. I hope you can do it very nicely. I just give a hint to this particular question. इस क्वेश्चन में एक प्रॉपर्टी हम यूज़ कर सकते हो, that is NCER plus NC
r minus 1 is equal to n plus 1 CR. That particular property we are going to use. And other type of question I already solved. You try and find out the value of the r, or sometimes what is given x. तो आप कर सकते हो, ठीक है. So these are the homework for you, and please try to solve it and accordingly submit also. So I hope I have taken today's class, and this is very simple type of questions I have solved to get an idea about combination. Okay, and in the next class I will solve a few descriptive type problems, about language type problems, how to solve these questions, and it will be discussed in the next class. Okay, I hope you understand my classes. If you understand my classes, please subscribe. ये जो लाल बटन दिया है गया है उसको आप क्या करिए, दबाइए, और you have to join in my family. Okay, such that a maximum of these students regularly get benefited from my class. Okay, all the best and have a good day.